Next, we have the Memorandum of Cooperation between India AI Mission and METI, Japan. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Ono Keiichi, Ambassador of Japan to India, and Ms. Nagma Mohammad Malik, Ambassador of India to Japan. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and Japanese languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Ms. Takaichi Sanae, Prime Minister of Japan, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप
हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानीज इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोज और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानी कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत
हमारी पीपल टू पीपल टाइज है। हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास। Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, to give her remarks to the media. 皆様、こんにちは。 Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share. And we confirmed to place the following 3 points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with FOIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. Expansion of maritime security cooperation is especially important for regional peace and stability. Taking the opportunity of our visit, a destroyer of Japan's Maritime Self-Defense Force and an India Navy vessel are planning to engage in joint exercise. We will enhance exercises in the Indian Ocean, promote naval maintenance, repair, and overhaul cooperation, and strengthen equipment
equipment cooperation under the Make in India framework. In order to deepen such cooperation, I have instructed the relevant departments to hold discussions and to organize the next Japan-India 2+2 before the end of the year. Second, promotion of Japan-India cooperation in the area of economic security and energy security. As both countries face challenges such as economic weaponization and non-market practices, we need to urgently build resilience in our critical minerals supply chains. Further, in the area of energy security impacted by the Middle East situation, both Japan and India bear the responsibility to provide for region-wide energy security, as I presented in Power Asia. That is why we have released a document for public and private sectors, a joint statement to engage in concrete action for economic security cooperation. Under the Power Asia initiative, we will launch a bilateral dialogue to strengthen India's petroleum stockpiling system. Japan also supports India's membership of the IEA. In the area of energy transition, India has set a goal of leveraging cooperatives to secure energy from cow feces to build 1,000 biogas plants. In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth, or CBG initiative. That was introduced by Prime Minister Modi. The third is co-creation of economic growth of both India and Japan through investment and innovation collaboration. This is economic growth. I am committed to realizing a strong economy and aiming to enhance Japan's supply capability and technological capabilities through investment in 17 strategic areas. Prime Minister Modi launched Viksit Bharat, a national goal to become a developed nation by 2047, and is strongly driving India's growth. In this way, we share the goal of making our countries strong and prosperous through investments in the future. Strongly supporting our two countries to achieve such common goals are the business community representatives who are participating in the delegation from Japan. During this visit, around 120 cooperation documents between Indian and Japanese companies, including 2 trillion yen scale investment, were announced. It is a desire to forge a path toward future in India and Japan through unified efforts of public and private sectors. Next year marks the 75th anniversary of diplomatic relations, and I would like to seize this opportunity to further bring in closer together the people of our two countries. Under the India-Japan Special Strategic Global Partnership, as trusted partners that share strategic direction, together with my bigger brother, Prime Minister Modi, I will lead the India-Japan relations going forward to a new phase. I look forward to welcoming Prime Minister Modi in Japan next time. Thank you very much. Thank you, Madam. With that, ladies and gentlemen, we come to the close. All right, so that was the joint statement that we got from Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart. They spoke about the need to strengthen the relationship amid the geopolitical uncertainties that the world is witnessing right now. Let me straight away go across to my colleague Akanksha, who's joining us live right now for more on this. Akanksha, let's start with how the Prime Minister addressed his Japanese counterpart. He called her a beautiful younger sister, and even she responded to that. And in the end, she said that she's looking forward to now welcoming Prime Minister Modi in Japan.
Absolutely, and that was, in fact, a reflection of the people-to-people ties, the old civilizational ties that India and Japan share. In fact, Prime Minister Takaichi hails from Nara, which is, in fact, known for its Buddhist temples as well. Buddhism, remember, is one strong, not just religious, but also social bond that cements India and Japan ties. But let's now talk about hard business, as was very apparent from Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi's exchanges right now. There is going to be tremendous focus on defense cooperation, something Prime Minister Modi alluded to when he spoke about technology transfer from Japan, which will be aided with the help of AI. More importantly, Prime Minister Takaichi has also highlighted the need for a free and open Indo-Pacific. She has also spoken about the need for greater maritime security under India's Mahasagar vision as well, and the role that the security of Indian Ocean can play. She also alluded to maritime security drills that will now be taking place between India and Japan. India is now going to also work towards the kind of investment that's coming in from Japan, something that Prime Minister had secured last year during his visit to Japan in August, which is amounting to 10 trillion yen. And so business is going to be an important aspect. Prime Minister has also spoken about how they will be looking towards clean energy. This will be through biogas initiatives as well, something that Prime Minister Takaichi also spoke about, how India and Japan will jointly build on that clean biogas energy initiative as well. Critical minerals has also been spoken about. So much of it is going to shape up even more so after the business forum that's all set to take place at the Taj Palace, where, remember, over 100 Japanese business leaders will also be in attendance. And also, Japanese Prime Minister spoke about India's mission to become Viksit by 2047. Now, I also want to talk to you a little bit about the key takeaways. You did mention about the, deals that have been signed, the MOUs that have been exchanged. But, interestingly, this visit is less focused on optics, I think more on the ramping up of economic ties between both countries, isn't it? Interestingly enough, Prime Minister Modi's personal capital has ensured that this bilateral relationship is not just economic in nature, but it's also personal in nature, which is why administration after administration, one that was in fact witnessed during the former Prime Minister, the late Shinzo Abe's time, when India and Japan elevated this partnership to a strategic and global partnership. And so ever since, we've seen that happen even during Prime Minister Fumio Kishida's time, Prime Minister Shigeru's time as well. When Prime Minister Modi visited last year, he secured that massive investment deal. And so Prime Minister Takaichi is only giving it shape to the kind of investment. Not to forget, it was last year that India and Japan unveiled that joint vision for a decade, and which is why this vision becomes extremely crucial for India and India's dream of a Viksit Bharat by 2047. Under this vision, India and Japan will be ensuring greater resilience, greater economic security and defense cooperation, which is pillar to this partnership. Well, absolutely. And Prime Minister Modi also said that mutual trust is our greatest strategic assets when he was speaking about Indo-Japan strategic and bilateral ties. Thank you very much, Akanksha, for the moment, for joining us with your inputs on this. Heading into a very, very short break, we'll be back with more. Stay with us.